Hey everyone, welcome back. It's Jyoti. What's happening? This is my first time listening to this artist. I always get very excited when I'm discovering a new artist or covering an artist for the first time because I have no idea what to expect. I have no backstory. I have no information. I have nothing of that sort. Like since I finished reacting to P-pop culture, a lot of comments, a lot of DMs about covering Arjan Dhillon. And like a lot, and people were like, you must. So I say, इतना intensity के साथ requests बहुत कम आते हैं किसी एक artist के लिए. तो I said, चलो, let's discover him. And unanimously, most of the project said कि क्या है, एक तरफा and मोहब्बत are the two tracks from his latest album. A for Arjun 2. एक तो A for Arjun 2 comments में लिखा हुआ. I'm seeing, I'm like, ये क्या है? At least finish your sentence, no? A for Arjun 2 album name, please cover songs, blah and blah. Just don't write A for Arjun 2 and leave, you know? कुछ तो context दिया करो अपने request वाले messages में. But ठीक है, A for Arjun 2 is an album just recently dropped, I think August में. And I'm gonna just without a pause listen to both the tracks because I'm hearing him for the first time, so I just want to get a vibe. So I'm starting with Ik Tarfa, and then I will play Mohabbat right after Ik Tarfa. And that way, I think 2 tracks, the most requested 2 tracks, will be good enough for us to understand his vibe as an artist. Chalo, 1, 2, 3, play. Sounds like an old movie. पुरानी फिल्म. रब करके तैनू भी किसे ना हो जावे एक तरफा. रब करके तैनू भी किसे ना हो जावे एक तरफा. तू भी किसे ਲਈ तड़पे जिवें तेरे ਲਈ मैं तड़पा. रब करके तैनू भी किसे ना हो जावे एक तरफा. रब करके तैनू भी किसे ना हो जावे एक तरफा. हिसाब ना देवे तेरे मैसेज देख लवे ते जवाब ना देवे. जिन्ना तू कर दे थोड़ा होर करे तैनू हो. जिन्ना कोई नहीं होया ना इग्नोर करे तैनू. फिर ना रहने नखरे ना रहन गिया मड़का. रब करके तैनू भी किसे ना हो जावे एक तरफा. रब करके तैनू भी किसे ना हो जावे एक तरफा. तू भी किसे ਲਈ तड़पे जिवें तेरे ਲਈ मैं तड़पा. रब करके तैनू भी किसे ना हो जावे एक तरफा. रब करके तैनू भी किसे ना हो जावे एक तरफा. ऑप्शन होवे तू थोड़ी जई तां करे. जी होवे गल कर ले जी होवे ना करे. ओदे नाम नाल भर ले तू साहां दे पन्ने. तू रब मन्ने जीनू तैनू कख भी ना मन्ने. इस हुस्न हवेली दियां मिट्टी कर दे चढ़ता. रब करके तैनू भी किसे ना हो जावे एक तरफा. रब करके तैनू भी किसे ना हो जावे एक तरफा. तू भी किसे ਲਈ तड़पे जिवें तेरे ਲਈ मैं तड़पा. रब करके तैनू भी किसे ना हो जावे एक तरफा. रब करके तैनू भी किसे ना हो जावे एक तरफा. जान जान बुलावे तू ओहो हूँ भी ना करे.
जच जच के बैठे तू ओह मूवी ना करे हाय उदे मगर होण जेड़े उन्हां सारियां विच रखे तू दिल विच रखे ओ तैनू लारियां विच रखे तू अर्जना रुल जेगा भावें ला ले शर्तां रब करके तैनू भी किसे ना हो जावे एक तरफा रब करके तैनू भी किसे ना हो जावे एक तरफा तू भी किसे लिए तड़पे जिवें तेरे लिए मैं तड़पा रब करके तैनू भी किसे ना हो जावे एक तरफा रब करके तैनू भी किसे ना हो जावे एक तरफा Oh, damn. That was so soulful and beautiful. And also, like, it really took me back in time. The entire arrangement, the melody of it took me back in time. Firstly, I have to say, I really like his voice. I really like his voice, and I really like that, unlike a lot of songs today, उसमें ज़्यादा vocal treatment नहीं किया था और बहुत ही sort of raw रखा vocal layers को, and it was brought the emotion, the rawness of the emotion out even more. So very nice, and obviously self-explanatory. It is about unrequited love and one-sided love. And जैसे ही वो start हुआ, I think मैंडोलिन था, because मुझे सीधे वो हम आपके कौन की याद आ गई. I don't know why, and it actually took me back to 90s film music, the melody of it, and एक बहुत ही famous गाना हुआ करता था about this. Was it from फिर तेरी कहानी याद आई, or was it like तेरे दर पर सनम हम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए, like उस जमाने की vibe, or like उस जमाने का like some song that was like this about one-sided love, उसकी याद आ गई. I can't put my finger on it, but yeah, I just feel like it's a very heartfelt unrequited love वाला गाना. लेकिन वो जो लाइन थी कि रब भी करे कि तेनू भी, what was that, हो जावे एक तरफा. I would not wish that on anyone, honestly. I don't think that's a very pure emotion, or a nice emotion, or a nice wish for someone. Like, if you really love someone and they're not returning your love, why would you wish one-sided love onto them? Don't you actually love them? But if you actually love them, you would not want them to be unhappy or go through a sad thing in their life. So I didn't really agree with that line per se, and वो बार बार रिपीट हो रही थी, तो बार बार मुझे लग रहा था ये बहुत ही सेल्फिश लव है कि आप किसी और के लिए ऐसा विश करोगे. तो वो मुझे इतना कनेक्ट नहीं हुआ. बट ठीक है, लेट्स गो टू मोहब्बत. होपफुली दैट विल बी अ मोर पॉजिटिव सॉन्ग. But I can see the pain and the angst, and the angst, which is the sadness of being in that one-sided lover wala situation. So very nice music by Harvinder Sidhu. Really nice. I felt the whole music arrangement of this was very back in the days when we used to, like, as much as you may hate the 90s, I love the 90s because I think melodically they were, the music of that era was top notch. So it really took me back to that time. Chalo, now let's listen to Mohabbat. 1, 2, 3, play. ਕਦੇ ਦਿਲ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਕਦੇ ਉੱਡ ਜੂ ਕਰਦਾ ਏ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਕਦੇ ਡੁੱਬ ਜੂ ਕਰਦਾ ਏ ਤੂੰ ਛੱਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਪਰੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤ ਤੈਨੂੰ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤ ਤੈਨੂੰ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹਾਏ ਸੌ ਸੋਚਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਕ
ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਤੇਰੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕੋਈ ਤੁਰੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸੌ ਸੋਚਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਤੇਰੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕੋਈ ਤੁਰੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਹੋ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਰੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤ ਤੈਨੂੰ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤ ਤੈਨੂੰ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਦਿਨ ਜੇ ਛੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੋੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬਸ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਜੇ ਛੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੋੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬਸ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜ ਮਿੱਠੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤ ਤੈਨੂੰ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤ ਤੈਨੂੰ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹਾਏ ਊਂ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਰੋਗ ਜਿਹਾ ਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸੋਹਣਾ ਸਾਂਵਲਾ ਸੱਜਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜ ਗਿਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਹਾਏ ਊਂ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਰੋਗ ਜਿਹਾ ਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸੋਹਣਾ ਸਾਂਵਲਾ ਸੱਜਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜ ਗਿਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਬਾਂਹ ਦਾ ਸਿਰਾਣਾ ਅਰਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਢੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤ ਤੈਨੂੰ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤ ਤੈਨੂੰ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ I loved it. Such a good, easy, sweet listen. I have to say the music arrangement, Harvinder Sidhu, beautiful. It almost felt like a romantic Mexican ballad is going on, and yeah, that very sad sereno vibes were happening. Beautiful, beautiful sonicscape, just so easy to listen to, and the lyrics are just very real. और वो structure मैं देख रही थी because I opened the lyrics quickly on the side, and it really feels like one of those very old school. First of all, I have to say, right, off the bat, that very old school vibes, very जो बात मैं तलविंदर के लिए बोलती थी right at the start when I first started covering his music here, that he seems to be heavily influenced by the retro music of the 50s, 60s, 70s, even 60s, I would say mainly. This very is bringing me back to the melodic eras also, 90s, 80s even. But mainly I feel like, I don't know why I'm feeling like 90s era ज़्यादा मुझे feel हो रहा है. Like really that era of Nadeem Shravan and all. I'm not saying it's like that, but वो आ रहे हैं. Vibes आ रहे हैं, लेकिन better than vibes, the word I'm looking for is emotionality. जो वे तब हुआ करती थी वो आ रही है. एंड ऑल्सो नाउ अगेन लाइक आई वुड से इन तलविंदर्स कि वो जो रिपीट होता है ना एक थॉट, और ये बहुत कवि सम्मेलन और शायर लाइक मुशायरे और गजलों में होता है, वेयर यू से वन लाइन, यू रिपीट इट सो द थॉट सेटल्स, एंड देन यू हिट द पंच लाइन विच यू ओनली से वंस. तो वो यहाँ पे हो रहा था, 2 लाइन और फिर रिपीट वो 2 लाइन और फिर पंच लाइन once and then hook. So wo ho raha tha, and I don't know if there is a name for this structure. I'm pretty sure there is, but this is what we see in a lot of our ghazal like genre spaces. So I really like that. That's another reason I felt like, oh, okay, this whole thing is happening again.
thought, repeat, thought, and punchline. Thought, repeat, thought, punchline. Very ghazal type structure, which works. And I just realized the best part. I did a search for the lyrics. Google gave me the lyrics, and then नीचे जो था एक button translate. I clicked on that, translate to English, and it's given me the Punjabi lyrics with the English translation over there. So I was happily able to follow and understand what the line is saying. So really beautiful thoughts, really beautiful writing, and I just really like his voice and this whole rawness in the music, which is minimal music arrangement. There are real instruments you can hear. There is a bit of a bass line that's standard. It's not standard, but it's sort of uniform. और उसके ऊपर जो गाने का स्ट्रक्चर उन्होंने बिठाया है वो अगेन बहुत ही ओल्ड स्कूल रॉनेस एंड हिज वॉइस ऑफ कोर्स विद द मिनिमल ट्रीटमेंट ऑन इट. ओवरऑल उसका इम्पैक्ट बहुत ही कि आप एक फ्रेंड के साथ बैठे हो एक रूम में और वो गिटार लेके या मैंडोलिन लेके आपके लिए गा रहा है, वैसी वाइब है. बहुत ही लाइक इट फील्स लाइक द पर्सन ऑन द स्पीकर इज सिटिंग इन द रूम विथ यू सिंगिंग. दैट्स हाउ आई वुड डिस्क्राइब इट. सो रियली नाइस और बहुत ही ब्यूटिफुल राइटिंग भी है, थॉट्स भी हैं और आवाज़ भी है. सो आई एम रियली लाइकिंग अर्जुन ढिल्लों. Very nice. Thank you guys for recommending and requesting. And if there are other songs with videos even that you think I should cover of his or any other artists in the scene, please do DM me for recommendations. I'm on Instagram. My handle is linked below, and or you can comment below and tell me your thoughts. And if I missed anything in these songs that you think you should highlight to me, then leave a comment as well. And again, thank you for introducing me to a new artist. Loved it. And I will see you in the next one. Take care of yourselves. Live long and prosper. ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤ ਤੈਨੂੰ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ